वेलकम टू नॉलेज अपडेट चैनल। आज 1 फरवरी 2024 निर्मला सीतारमन ने आज एक इंटरिम बजट पेश किया है। ये वीडियो में बहुत क्विकली मैं टैक्सेशन रिलेटेड जो चेंजेस प्रपोज किए उसकी हम बात करेंगे। फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, कोई चेंजेस ज़्यादा नहीं है टैक्स रेट के अंदर, स्लैब के अंदर, इनकम टैक्स रेट, जीएसटी रेट, कस्टम ड्यूटीज, कोई भी रेट में चेंज नहीं हुआ है, बदलाव ज़्यादा नहीं है, बहुत कम चेंजेस किए हैं। ये इंटरिम बजट था तो ऐसा लग रहा था कि चेंजेस बहुत कम हो गए, बट ये तो बहुत ही कम चेंजेस हुए हैं। हार्डली देयर आर फ्यू चेंजेस जो करने लायक थे, बाकी उसको चेंज किया ही नहीं है। अब देखते हैं क्या चेंज हुआ है। तो जहां पे एक साल जो था, जहां पे सब कंडीशंस थे कि विद इन 1 ईयर, विद इन द पीरियड ऑफ 31 मार्च 2024 समथिंग शुड बी कमेंस्ड, वो जो पीरियड था कमेंसमेंट का, उसमें उन्होंने एक्सटेंशन किया है। तो प्राइमरली देर आर 3 प्रोविजंस। वन इज सेक्शन 10(4)(d), AA(c), 10(4)(f) and 80(la)(2)(d. These three are related to IFSC, where there was a need that it has to be commenced operation by 31st March 2024. It has been extended by 1 year because ये इंटरिम बजट है। तो इंटरिम बजट के बाद क्या, बिकॉज फाइनल बजट आएगा जुलाई में 2024 के अंदर। सो दिस हैव बीन गिवन एक्सटेंशन ऑफ 1 year. In case they commence operations by 30th March 2025, still they are eligible for the exemptions or deductions which is provided in these sections. सेक्शन 1023(FE) उसमें जो कवर्स है इन्वेस्टमेंट विच आर मेड इन बिजनेस ट्रस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, विच आर स्पेसिफाइड इन दिस सेक्शन। एंड वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 80(IAC) विच इज फॉर एलिजिबल स्टार्टअप्स। अगर वो स्टार्टअप बिजनेस है एलिजिबल है, जिसकी डेफिनेशन में कवर्ड है, तो वहां पे भी लास्ट डेट था 31 मार्च 2024। लास्ट ईयर भी इसको एक्सटेंड किया था, ये साल भी उसको एक्सटेंड किया है। तो अगर एलिजिबल स्टार्टअप है और वो ऑपरेशन कमेंस कर सकते हैं बाय 31 मार्च 2025 इंस्टेड ऑफ 24, देन दे विल बी said as compliant with the conditions. Same way, extension of 1 year has been given for these cases, जहां पे सेक्शन 92(CA)(9 which makes reference to transfer pricing. So transfer pricing की जो प्रोविजंस है वहां पे आर्म्स लेंथ प्राइसिंग डिटर्मिनेशन है। फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइसिंग, the officer has been given, the government has been given power to provide and specify the how to determine arms and transactions. उसका लास्ट डेट 30 मार्च 24 था, जिसको एक्सटेंड किया मार्च 25 से। Under section 144(c), there was reference to dispute resolution panel, where there was a power to give direction up to March 24, again it has been extended to March 25. Section 253(9), which talks about appeals to appellate tribunal. Again, in that case, these all are sections where there's a power given to provide direction for simplifications, for making it more easier and simpler. And that power was up to March 24. Now they extend till March 25. Under section 22558, there was a procedure for appellate tribunal. There was a requirement, there was a power to make it simplification by faceless appeal or by other manners. That power has been again extended from March 24 to March 25. So earlier we discussed about extension of the clauses or requirement to commence operation from by 1 year from March 24 to March 25. In this slide, we discuss about giving a power to provide directions for simplification and for changes by 1 year. एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है जो अपने को ध्यान में रखना है, जो चेंज नहीं है अबाउट द न्यू मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस। 15% का जो रेट है फॉर न्यू मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस, जिसका लास्ट डेट मार्च 24 था, इसको यहाँ पे एक्सटेंड नहीं किया है। सो इन केस इफ यू बी एमिंग फॉर द रिवाइज रिड्यूस्ड टैक्स रेट ऑफ 15%, please ensure by 31st March 2024 this has to be completed if you want to get the benefit. अब ये जो बात मैं कर रहा हूं, ये पर्टिकुलर पॉइंट डिस्कस हुआ था फाइनेंस मिनिस्टर के स्पीच के अंदर। एक्ट के अंदर कोई चेंज नहीं है, बट मेरा मानना क्या है कि यहां पे जो लिखा है
रेफरेंस टू डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, तो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेक्शन 144C, जहां पे द पावर हैज बीन गिवन विद रिस्पेक्ट टू प्रोवाइडिंग डायरेक्शंस और गाइडलाइंस, in that particular thing probably there can be some kind of rules, notifications, circular may be provided in the future where they can determine that in case of outstanding direct tax disputes or demands is up to rupees 25,000, जहां पे फाइनेंशियल ईयर अप टू 9-10, तो दे में विड्रॉल ऑब्जेक्टिव क्या है कि स्मॉल अमाउंट है, डिस्प्यूट चल रहा है, कितने सारे केसेस है जिसको अपने पास टाइम नहीं है फॉर लार्ज केसेस, व्हाई टू स्पेंड सो मच टाइम ऑन दैट पार्ट। सो फाइनेंशियल 9-10 तक का अगर कोई भी टैक्स डिमांड है विच हैज बीन अंडर डिस्प्यूट अप टू रुपीज 25,000 रुपीज, इट विल बी विड्रॉन। एंड फॉर फाइनेंशियल ईयर 10-11 टू 14-15, अगर वो टैक्स डिमांड का डिस्प्यूट 10,000 रुपीज तक है, देन इट विल बी विड्रॉन। अब ये जो चीज है वो फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने स्पीच में कहा था, एक्ट में कहीं नहीं है। सो आई एम श्योर दैट मे बी इन द फ्यूचर वेरी सून देयर विल बी अ डिटेल guidelines or circulars or notification which will be provided that will clarify this particular point. Now, one very important thing when you just look at finance bill, we'll identify there are section TCS related section है, उसमें amendment किए हैं, बट ये जो अमेंडमेंट है वो प्राइमरली विद रिस्पेक्ट टू द सर्क्यूलर व्हिच इज इश्यूड ऑन 30 जून 2023। लास्ट ईयर बजट में फाइनेंस एक्ट 2023 में देयर हैव बीन चेंजेस फॉर टीसीएस ऑन ओवरसीज टूर पैकेजेस एंड अदर केसेस। Thereafter, there was a circular issued on 30 June 2023 which talks about the clarifications of application of these particular provisions. बट जो सर्क्यूलर्स में लिखा था वो एक्चुअली एक्ट में नहीं था। सो इन माय व्यू द एक्ट हैज बीन नाउ मॉडिफाइड टू गिव इम्पैक्ट ऑफ व्हिच हैज बीन प्रोवाइडेड इन अ सर्क्यूलर। सो दिस पर्टिकुलर चार्ट talks about what is already been there today by way of circular, and however this has been amended by way of Finance Act 2024. So the only very important change which was there, so from 1st October 23, there are two ways when there are changes is one overseas tour packages and any other cases. For overseas tour packages, there is a 5% TCS till 7 lakhs rupees and 20% for excess. And in other cases, nil amount of TCS up to 7 lakh rupees and 20% for excess. So that is what has been the change which is effective from 1st October 23. So under this Finance Act, Finance Bill 2024, the circular number 10 related changes have been incorporated. Taking last point, there is on GST. As I mentioned, कोई GST रेट में चेंज नहीं है. There is no amendment as far as GST concerned. दो चेंजेस जो मुझे यहाँ पे लगे बात करने के, वो है फर्स्ट अबाउट इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर. तो ISD जो है उसके रिलेटेड प्रोविजंस में डेफिनेशंस एंड सर्टेन गाइडलाइंस एंड प्रोविजंस हैव बीन मॉडिफाइड. द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट इज टू रियली कवर रिवर्स चार्ज मेकैनिज्म RCM व्हिच आर कवर्ड इन सेक्शन 93 और 94. तो जो पहले वो कवर नहीं था, इसको इसमें ISD के अंदर उन्होंने कवर किया है. Second very important thing, section 122A has been introduced now, which talks about a penalty provisions of rupees 1 lakh per machine which are not registered. So I think ये जो provision है in for certain specific cases, it may be notified in the future कि certain specific cases they are required to get registered than machinery. और अगर वो मशीनरी को रजिस्टर नहीं करते हो तो पर मशीनरी 1 लाख रुपीज पेनल्टी विल बी देयर. सो दिस इज अगेन अ न्यू थिंग. सो फ्रेंड्स, ये आज जो प्रोविजन इंटर बजट था उसमें ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है. इट्स ओनली इंटरिम. सो वी एक्सपेक्ट दैट द फाइनल बजट व्हिच विल कम आफ्टर इलेक्शन देयर मे बी चेंजेस, बट सो फार लास्ट ईयर जो हमने किया था उसको कंटिन्यू करना है, एक्सेप्ट फ्यू थिंग्स जहां पे इसको एक्सटेंड किया हुआ है. On my website chintan.com, I've also uploaded a separate sections on section 43BH clause, whereas a lot of issues are there. I have uploaded videos on burning issues, response to burning issues, certain presentations, materials, and also explaining the provisions, and all the materials related to budget also have been uploaded on this website. So please go through it. If you have any questions or comment, please feel free to come back to me. Thank you so much.